So let's start today's class. Today we will finish this chapter, that is wave optics, and last topic is what? Polarization. First of all, what is meant by polarization? Okay, what is meant by polarization? See here, the phenomena of restricting the vibrations of transverse wave in particular direction. Means, see, light is an electromagnetic wave. Light consists of electric field vector as well as magnetic field vector, है ना? So we are going to restrict the electric field vector of a light in particular direction. This is nothing but what? Polarization of light. Understand? The phenomena of restricting the vibrations of transverse wave in particular direction. Is nothing but what? Polarization. Okay. The phenomena of restricting the vibrations of transverse wave in particular direction is what? Polarization. And if you want, again I am writing here polarization of light. As I told you, light consists of electric and magnetic field vectors, because light is an electromagnetic wave. So polarization of light, phenomena of restricting the vibrations of light in a particular plane. Okay. Phenomena of restricting the vibrations of light in a particular plane. That is what? Polarization of light. So next point, you see electric component of light, as I told, is mainly responsible for optical effects. जैसे कि अगर आप देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझो. What is this? Electromagnetic wave. I am drawing. Just wait. Just rough diagram, so that you will understand how is the electric field vector and in which direction magnetic field vector is there. Just rough diagram like this. And one more, something like this. You can see. So this is z axis, है ना? Along z axis, and this one is along y axis. You see. Suppose this is x, this is y, and this is z. Then along y axis what? E bar. That is what? Electric field vector. Along z axis b bar, है ना? तो इसको हम k cap भी लगा सकते हैं, है ना? Along this is k cap, and this is what? Direction of propagation
which is velocity we can say, है ना, और ये जो है ये j cap. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दिस इज व्हाट द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स इन पोलराइजेशन, है ना. So polarization means what? Restricting of electric field vector in particular direction or particular plane. We are not allowing that electric field to go anywhere. Okay, we are restricting it. जैसे कि एक बच्चे को हमने रूम में छोड़ा है, उसको उसके बाहर जाने की परवानगी नहीं है ना, मतलब परमिशन नहीं है, तो क्या है वो रिस्ट्रिक्शन है. दैट इज व्हाट पोलराइजेशन मींस. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में. दैट इज व्हाट polarization. Understood? And this electric field vector only responsible for optical effects. Any doubt? Yes. Clear hai? Good. Right. Now, let's move ahead. I am erasing this part. Okay. Next, you see here. Next point, what I am writing. When all the vibrations of light, when all the vibrations of light wave are in a single plane, which contains the direction of propagation of wave, which contains the direction of propagation of wave yes, this is first page only. When all the vibrations of light wave are in a single plane which contains the direction of propagation of wave is said to be plane polarized or linearly polarized wave. Okay, plane polarized means what? एक ही plane में, ये देखो plane polarized means what? Restricted to one particular plane. Simple answer. If someone will ask you what is the plane polarized light, means what? The light which is restricted to what? To travel in one particular plane, है ना? Yes, no, that is what? Plane polarized. Okay. And next one, if suppose unpolarized light is there, unpolarized means what, ray? Which is not restricted. Unpolarized means what? Which is not restricted. So unpolarized means what? Any example can you tell? जैसे कि सनलाइट है ना, सन, उसके बाद बल्ब से जो लाइट आती है वो कैसे है? अनपोलराइज्ड है. क्यों? क्योंकि वो किसी एक प्लेन में ट्रैवल करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो उसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. तो देखो हमने इस पेज में क्या क्या देखा है. First of all, what is meant by polarization? Polarization means what? Restriction. Okay, right. Next, polarization of light means what? Phenomena of restricting the vibrations of light in particular plane. Next, which
component is responsible for optical effects? Electric component. Next, what is plane polarized light? Means when light is restricted to travel in particular plane. That is what? Plane polarized. Unpolarized light means what? Which is not restricted. For example, what? Sun or bulb. Sunlight or bulb light. है ना? Clear है? Understood? Note down please. Yes, finished. Any doubt? Please ask. Shall I go to the next page? Okay. Right. Now, next one. What is the Malu's law? कुछ लोग मैलस भी बोलते हैं इसको. ओके, आपको जो बोलना है बोलो. वो कौन सा साइंटिस्ट झगड़ा करने जा रहा है यहाँ पे? मेरा नाम ऐसा क्यों लिया कर? जितना आपको जो बोलना है बोलो. कोई बात नहीं. हाँ? Whatever is हाँ? ओके, तो चलो देखते हैं. क्या बोलोगे आप? देखो इसको. हाँ? मैलस लॉ बोलोगे, मालूस लॉ बोलोगे, जो भी है बोलो. ठीक है, लेकिन लॉ चेंज मत करो. ओके, so keep the heading Malu's law. हो गया? राइट. तो मैं तो मालूस बोलता हूँ. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. The intensity I, the intensity I, the intensity I of the light, transmitted by the analyzer, transmitted by the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of
cosine of angle between transmission axis of analyzer and polarizer. That is, I is diagonal proportional to cos square theta. And therefore, I is equal to I naught cos square theta. I is equal to I naught cos square theta. ठीक है? तो पहले नोट डाउन करो. Yes, हो गया. Now you may have one doubt, sir. What is this analyzer and what is this polarizer? Okay. What is this analyzer and what is this polarizer? है कि नहीं? मैं एक डायग्राम दिखाता हूं so that you will understand everything clearly. So wait for a minute. So देखो यहाँ पे मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा. एनालाइजर क्या होता है? जो एनालिसिस करता है ना. पोलराइजर क्या करता है? जो लाइट को रिस्ट्रिक्ट करता है. समझ में आया? एनालाइजर क्या करता है? एनालिसिस करता है. पोलराइजर क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है. रिस्ट्रिक्ट किसको करता है? लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. वो हम देखेंगे कैसे. अब देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा. See here, this is what direction we can say, direction of propagation. Okay, या तो फिर one line of reference. ठीक है. Okay, now here we are having unpolarized light. What we are having? Unpolarized light. Unpolarized light means what, Ray? The light which is not restricted. So it is traveling something like in all possible directions. Okay. Something like. अब ये यहाँ पे आ गई. ठीक है. Is what the propagation we can say. Now I am drawing one polarized. One polarized. How is that polarized? Just a minute. I will draw.
यस, अब देखो यहाँ पे आई एम ड्राइंग विथ व्हाइट कलर दिस पोलराइड्स. हाँ, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो लाइन दिख रही है इसे कहते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस. ओके, जो कि मैं आपको डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ठीक है, ये है पोलराइट. क्या है ये? पोलराइट. पोलराइट दैट इज P1. अब इसके बाद जब लाइट इससे ट्रांसमिट होगी, दिस इज व्हाट पोलराइज्ड लाइट. सो दिस इज व्हाट द सिंबल ऑफ पोलराइज्ड लाइट वी कैन से. ऐसे बीच में डॉट लगाओ और ये ऐसे एरो, दैट इज व्हाट पोलराइज्ड मीनिंग इज. This is unpolarized. This is what polarized light means, restricted light. Now I am drawing one more analyzer here. Something like this. And let us suppose this is what its axis, transmission axis. And now ये जो angle है, ये angle है theta. Something like this. और इसके बाद जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी? थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे. कौन सा लेंगे? रेड लेते हैं. समथिंग लाइक, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड है ना, लाइक. अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहता है लाइट का वो कितना है? I0. इनिशियली इट इज I0. इस पोलराइड से पास होने के बाद कितना होगा? I1 इज इक्वल टू समथिंग I0/2. यहाँ पे अगर हमें करना है तो कितना आएगा? I2 इज इक्वल टू I1. हाँ, और I1 मीन्स I0/2 है ना, cos square theta/2. ओके, according to this law you see this is I0 ना, cos square theta. ओके, cos square theta. तो अगर I1 चाहिए तो क्या होगा? ये I0/2. इधर कितना आएगा? I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा. है कि नहीं? यहाँ पे बाय 2 नहीं, ओनली थीटा आना चाहिए. यस, cos स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द लॉ. मतलब जो भी एंगल पहला है आपको क्या करना है? इंटेंसिटी जो आएगा वो इंटेंसिटी पहले इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर थीटा होता है, जो कि एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर है. ठीक है, समझ में आया? क्या करना है आपको? क्या करना है? इसमें से जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी? I0 cos स्क्वायर थीटा. है कि नहीं?
इसमें से जो आएगी इंटेंसिटी वो कितनी होगी, इसकी इंटेंसिटी I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो थीटा क्या है इन दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस। Sir, I did not understand why you are writing I1 is equal to I0 by 2. This is what you should get question. Let's prove it. अगर हम देखें I polarized का, पहले ये समझ में आया, लॉ समझ में आया, क्या है लॉ? Intensity of the light transmitted by the analyzer, ये क्या है एनालाइजर, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं, ये एनालाइजर है, इसको मैं P2 बोलता हूं, ये एनालाइजर, इसे मैं बोलता हूं P2 is the light transmitted by the analyzer, इसके अक्रॉस का जो लाइट है दैट इज ट्रांसमिट होने के बाद जो लाइट आ रहा है इंटेंसिटी, ये I2 है, is डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो ये देखो cos स्क्वायर थीटा, ये I1 क्या है कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे आ गया पहला इंटेंसिटी जो भी हो, है ना, जो कि यहाँ से पास हो रहा है। अब वो क्यों आता है और कैसे आता है वो हम देखेंगे। तो देखो पहले अगर हम देखें, if we will see, listen here, try to understand, this I naught intensity is there, yes or not, intensity, and intensity is directly proportional to what ray, amplitude square, electric field vector, amplitude is what, E naught, we know I is directly proportional to amplitude square। यहाँ पे जो इंटेंसिटी है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, ये जो वेव है कि नहीं, ये वेव, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ई नॉट है कि नहीं, समझ में आया, वो एम्पलीट्यूड है, इसीलिए इंटेंसिटी कितना होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट सर, अंडरस्टूड। नाउ अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं I फ्रॉम दिस लॉ ओनली, I is equal to I नॉट cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, सही है। तो अगर मैं इसको I बाय आई नॉट करूं, मतलब दोनों साइड से I बाय आई नॉट से डिवाइड करूं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए रे, इसको मैं क्या लिखता हूं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं, I नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय E नॉट स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना। तो अब ये E नॉट स्क्वायर विल गेट कैंसिल, I बाय आई नॉट क्या आ गया अपने को, cos स्क्वायर थीटा, सही है ना। तो इस हिसाब से क्या बनता है फिर से, I इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, देखो एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, ये 1/2 पाई एज इट इज, cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिखूं, बोलो बोलो, 0 to 2 पाई 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, सही है क्या, इनटू डी थीटा। अगर हम ये सॉल्व करें तो कितना आता है वैल्यू, 1/2, है ना, ये क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू है, इसीलिए यहां पे जब आता है तो कितना आता है, I नॉट बाई 2 आता है कि नहीं। एंड देयरफॉर क्या मैं ऐसे लिखूं, I फॉर पोलराइज्ड लाइट इज इक्वल टू हाउ मच, I नॉट बाई 2, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, क्लियर है। इस पेज पे हम क्या क्या पढ़े देखो, वी हैव लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल मालूस लॉ। व्हाट इज मालूस लॉ, intensity of light transmitted by the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of angle between transmission axis of analyzer and polarizer। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी देखे तो क्या है, I2 है डायग्राम में, I2 is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ I2 is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे I2 अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, I1 इंटू cos स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 is diagonal proportional to cos square theta। उसके बाद क्या लिख सकता हूँ, I1 is equal to I0 cos square theta, है कि नहीं। यहाँ पे अगर एवरेज वैल्यू देखिए cos square theta की तो कितनी है, 1/2, एंड इसीलिए क्या आ रहा है, I0 by 1/2। अंडरस्टूड, एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर है? यस, प्लीज नोट डाउन। Yes, everyone finished? Yes, finished. Shall I go to the next page? Understand? Any doubt? Okay, right. Try to write at corners. Whatever you are having doubt, you can note down either integration or whatever it part. Anything you can write at corner so that you will understand everything. This integration, amplitude, intensity relation already we have learned. Okay, so you can write somewhere. Yes, everyone finished? Shall I go to the next page? Right. Next is Brewster's law. That is last topic. Then our chapter will finish. Brewster's law. It is very easy. Here, tangent of angle of polarization, tangent of angle of polarization
is equal to refractive index of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कितना इजी है देखो, क्या है लॉ, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जैसे कि कैसे होता है ये देखो एक बार, सी हियर विथ डायग्राम। हाँ यस, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। हाँ सुनो, गुड। अब देखो यहाँ पे मैं दो मीडियम ले रहा हूं, दिस इज μ1 and this is μ2, two mediums. First medium is having refractive index μ1, second medium is having refractive index μ2। अब ये जो लाइट आ रही है ये देखो यहाँ पे ऐसे, और ये कुछ ऐसे जाएगी, और ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। और यहां से ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट भी होगी, है कि नहीं, राइट। अब जो समझना है वो क्या है, ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना 90 डिग्री, और ये जो लाइट है ये लाइट सब कुछ पोलराइज लाइट है, तो इसलिए मैं इसको रेड से डिनोट कर रहा हूं। तो पोलराइज लाइट ऐसे जा रही है थोड़ी सी इधर, ठीक है। और ये अनपोलराइज लाइट ऐसे। अब ये जो एंगल है ये एंगल है पोलराइजिंग एंगल, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, लेट अस सपोज θ2, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। μ1 sin of θp is equal to μ2 sin of θ2, है ना, एट पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब μ1 sin θp is equal to μ2 sin θ2 चाहिए ना, तो इसको हम कैसे लेंगे, θ2 को कैसे लेंगे, 90 माइनस θp कर दूं, 90 माइनस θp, या तो ये एंगल आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, साइन 90 माइनस θp, एग्री विद एवरीवन, यस और नो, एग्री विथ मी, साइन 90 माइनस θp लिख रहा हूं इसको, θ2 को, सही है। अब इसके बाद अगर मैं ये ले लूं तो क्या हो जाएगा, μ2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये होगा μ1 साइन ऑफ थीटा, सही है ना। अब ये इधर डालो, ये इधर डालो, साइन थीटा पी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा पी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, and therefore tan of theta p is equal to μ2 by μ1, and this is what
our Brewster's law, है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर आपको इसको μ/1 भी लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं? हमने देखा है रे ऑप्टिक्स में, इसको आप μ/1 भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ/1, सही है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो क्या है ये मालूस लॉ? क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना? ओके, यहाँ पे देखो रे, इस पॉइंट पे μ1 sin थीटा पी, ललित देखो, μ1 sin थीटा पी इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। ये तो अपना स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये एंगल और ये एंगल μ1 sin थीटा पी इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। अब ये यहाँ पे क्या किया हमने, बस ये थीटा 2 को क्या लगाया, 90 माइनस थीटा पे लगाया है कि नहीं? क्या लगाया वहां पे? sin 90 माइनस थीटा। यस, यस। तो बस हमने क्या किया, इसको cos थीटा लगाया और बाद में ओहो, ये डाउट है तुम्हें। अब देखो रे, ये यहां से लेके यहां तक का अगर देखे हम लोग तो ये क्या है रे, 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा पे हो गया। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा पे होगा। अब फिर से ये 90 है, तो 90 माइनस ये एंगल किया तो वही एंगल आ जाएगा ना। क्योंकि ये दोनों फिर से परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ये रे और ये रो, ये और ये। तो इसको थोड़ा सा थ्योरी चाहिए, अगर थ्योरी चाहिए तो आप इधर लिख सकते हो, unpolarized light is reflect incident on a reflecting surface the reflected beam is completely polarized उसके बाद कहाँ पे लिखूं, इधर लिखता हूँ, ठीक है। Refracted and reflected beam
are perpendicular to each other, and angle of incidence, that is theta p, इसको क्या बोलते हैं? Polarizing angle, polarizing angle or Brewster's angle, or Brewster's angle. Angle of incidence at which refracted and reflected beam are perpendicular to each other, ऐसे भी आप बोल सकते हो। क्या है वो? क्या है वो? Brewster's angle, the angle of incidence for which angle of or refracted beam and reflected beam are perpendicular. यहाँ पे आप यूजिंग स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हो। ये समझ में आया? यस और नो बोलो। यस यस। नहीं नहीं, ये और ये रे, ये और ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बोथ आर परपेंडिकुलर। These two are perpendicular. हो गया? अगर आप यहाँ पे थीटा पी प्लस 90 प्लस थीटा करो, थीटा टू करोगे तो 180 आता है ना रे। आप कर सकते हो वैसे भी, कैसे भी करो ना। थीटा पी प्लस 90 प्लस थीटा टू इज इक्वल टू व्हाट? 180। तो अब ये थीटा पी प्लस थीटा टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? हाँ या ना? अब थीटा टू क्या होगा? 90 माइनस थीटा पी होगा, है ना ललित? समझ में आ रहा है ललित? अगर आप ये लाइन देखो, इधर देखो कि जिसको समझ में नहीं आया वो थीटा टू,
ये थीटा पी, ये 90 और ये थीटा 2, ये तो 180 डिग्री है ना। ये जो पूरा एंगल है ये तो 180 है ना। तो ये थीटा पी प्लस 90 प्लस थीटा 2 180 करो। उसके बाद ये थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा पी इज इक्वल टू 90 आएगा। उसके बाद थीटा 2 90 माइनस थीटा पी, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। यस और नो, क्लियर है? यस नो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे भी करो, ठीक है। नोट डाउन फास्ट, कोई डाउट है तो पूछो। ये आप पॉइंट जब लिख रहे हो ना तो इसको आप नंबर 1 दे दो, ये नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। हाँ ऐसे लिखो, एक के नीचे एक, ठीक है। हाँ नाउ अंडरस्टूड क्लियरली सर, गुड। ठीक है, हो गया। So in this way we have finished the chapter. We will start electric charges and fields. Okay, shall we stop here then? Everyone finished?